चाहती हूँ डिट्टो। ओके, भागवत जी और रेखा जी के साथ इस मंच पर बुलाने के लिए सुरुचि प्रकाशन का बहुत धन्यवाद। अब आज का एजेंडा। जब मैं पहली बार डॉक्टर मोहन भागवत जी से मिली उनके पुराने झंडे वाले हेडक्वार्टर्स में, तो मैं काफ़ी प्लेजेंटली सरप्राइज थी। ये RSS के हेड थे और उनका मैनरिज्म बहुत ही डाउन टू अर्थ, ओपन और एक्सेप्टिंग था। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई सेरेमनी नहीं, कोई प्रोटोकॉल ब्रीफिंग नहीं। मेरा बहुत सारे सीधे और उल्टे सवालों का जवाब दिया, आराम से समझा के। किसी भी बात पर उन्होंने आपत्ति नहीं करी। ये बात मैंने नोट करी कि संवाद विवाद पे कोई रोक नहीं थी। इनफैक्ट डिस्कशन इनकरेज किया गया। दूसरी बात मैंने ये ऑब्जर्व करी कि कोई तामझाम नहीं था। बिल्कुल एक सिंपल कमरे में मिले। कमरा पूरी तरीके से फंक्शनल था, पर कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं था। सिंप्लिसिटी वॉज अ वे ऑफ लाइफ। कुछ ही दिन पहले मैं उनके नए हेडक्वार्टर्स देखने गई थी, तो मुझे लगा कि अब इन्होंने तो एक बहुत ही शानदार जगह बना ली होगी। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है, पर वो सादगी अभी भी मेंटेन की ही। ऐसे एक संस्था का रियल प्रिंसिपल पता चलता है। बातें बड़ी बड़ी तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पर अपने ही असूलों पे चलने से उनको दिक्कत होती है। From what I have seen, RSS lives by the principles of simplicity and discipline. तीसरी चीज़ जो मैंने RSS के बारे में नोट करी, उनकी लॉन्ग टर्म विजन एंड प्लानिंग। बहुत ही कम संस्था हैं जहां एक ब्लूप्रिंट 100 साल के लिए बनाया जाता है और फिर पूरे आस्था से फॉलो किया जाता है। उनके ये लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग हम सब के लिए एक लेसन है, क्योंकि अब हम इतने फास्ट वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ शॉर्ट टर्म गोल्स पे ही फोकस रहता है। अब आप उनके सारे ब्लूप्रिंट से अग्री करें या ना करें, आपको उनकी कमिटमेंट और कन्विक्शन को तो रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। चौथा, RSS का सेंटेनियल विजन, जिसका कॉन्सेप्ट इज सेंटर्ड अराउंड 5 परिवर्तन टू ब्रिंग अबाउट अ कोहेसिव सोसाइटी थ्रू हार्मनी। हाल में ही ये सबको देखने को मिला कि संघ के लोग उत्तराखंड में सामाजिक सेवा के भाव में रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में लग गए थे। सिविलाइजेशनल फाउंडेशन पर इंडिया टुडे ग्रुप के 2 मिशन हैं, जिनको आई थिंक RSS भी अप्रिशिएट करेगा। और आज मुझे RSS चीफ को खुद बोलने का मौका मिल रहा है। सर, your volunteers at the grassroots level work towards strengthening the 5 pillars on which society can be improved. The 5 Parivartan program, which you have articulated so well. The pillars of social harmony, family enlightenment, environmental awareness, selfhood, and civic duties. These are essential for a thriving community. We also believe in India today that we cannot have true economic progress without social change. We have launched an initiative called GDB, Gross Domestic Behavior. There is a big push towards gross domestic product and India becoming the 3rd largest economy by 2030, which is fantastic. But we believe this must go along with our leadership in societal norms, because the two are intrinsically connected and feed each other. The first way to bring about change, to improve something, is to measure it. This is hard because culture is an intangible. How do you go about measuring it? But we have collaborated with data analytics organization How India Lives, and after many iterations, developed a social metric. We conducted detailed behavioral surveys across 21 states and correlated it to real data to gauge the attitudes across 4 broad dimensions: civic behavior, public safety, gender attitude, and diversity and discrimination.
In this survey, we have measured public attitude towards various issues such as littering, willingness to help citizens in distress, traveling without a ticket, discipline in traffic, corruption, inclusivity. I would like to present this special issue to you, and I will do that straight after it. It's on the table for you. I would really like your feedback on it and how to improve it, as you and your organization have a very good handle on the people's pulse. And GDP and GDP have to go hand in hand, because they say in business school, culture will eat strategy for breakfast. So we need to work on our culture as much as our economic strategy. Our second mission is along the lines of creating social harmony. And I bring this to your notice because this fits so well with your thinking. You have said on many occasions, Hindu Dharma teaches us to follow the universal Dharma of humanity, and that India should set the example how different faiths and ideologies should live together in harmony. We agree with this. And our initiative to promote this social synthesis in society is called Candid Constructive Conversations, 3 Cs. It's very similar to your Satbhavna meetings. Here we try to create what we call living bridges between communities to talk to real people with real stakes on real issues like caste, religion, interfaith marriage, crime, reservation. The effort here is to bring focus on common points of agreement in a hyper-polarized world, in the hope that this will create a better understanding and empathy towards each other. We believe this kind of societal transformation is critical for our next 100 years. This year, India Today Group will also turn 50. And we believe that a disciplined civic faculty and a sense of seva must be propagated for an India tomorrow. And since I have been given free rein, which I greatly appreciate and value, I would like to end with 2 suggestions for the RSS as they draw up their blueprint for the next 100 years. Firstly, in our first gross domestic behavior study, Indians' attitude to accepting corruption of a way of life is very disheartening. In one state, corruption is accepted as a necessity by 94% respondents. We must not allow this collective surrender to corruption, and we must work hard together to root it out. If anyone can do it, it's definitely the Sangh. My second suggestion is that if women could be included more in the leadership council of the main RSS organization. I know Mrs. Asha Sharma plays an important role in the women's wing, and I've had a chance to meet some of the wonderful ladies today in the room upstairs. But I believe some representation is necessary in the core council if we want to bring about societal change. And they should be included not just because of their gender, but because of merit, and because women are the tent pole, the change agent of every family and society. और आज इसका इतना अच्छा स्टार्ट हुआ है क्योंकि आप हम 3 लेडीज के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं. So इस पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करती हूँ एंड डॉक्टर भागवत जी को RSS के 100 साल पे हार्दिक बधाई देती हूँ.